بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. ناظرین، میرا نام ہے احتشام ارشد نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں وی لاگ ENN. اور ناظرین، آج ہمارا یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. عموماً ہم سیٹرڈے کو پروگرام کرتے ہیں اور کبھی کبھی کرنٹ افیئرس پہ وینسڈے کو بھی کرتے ہیں، لیکن آج اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. بہت ہنگامی صورتحال ہے بنگلہ دیش میں، اور بنگلہ دیش کا جو کمیونیکیشن ہے وہ پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے. یعنی ہوائی جہاز بند، ٹرینیں بند، بسز بند، اور حتیٰ کہ انٹرنیٹ کنیکشن بھی بند ہے. ٹی وی سے کوئی خبریں آپ نہیں سن سکتے، اخبار سے کوئی حقیقی خبریں نہیں آ رہی ہیں. تو اس لحاظ سے ریومرز بھی بہت اڑ رہی ہیں. ریومرز یہ بھی ہیں، افواہیں یہ بھی ہیں کہ گورنمنٹ کے بہت سارے MPs جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں وہ ملک سے بھاگ چکے ہیں. بلکہ یہاں تک انڈیا ٹوڈے میں تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی تھی کہ افواہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ بھی ملک سے باہر چلی گئی ہیں. مگر صحیح صورتحال ہمیں یا کسی کو نہیں معلوم. اور لیکن جب دیکھا یہ گیا ہے کہ جب اس قدر ملک میں انارکی ہو اور ملک میں ڈکٹیٹرشپ اتنی ہو کہ پابندیاں ہوں کمیونیکیشن پہ، پابندیاں ہوں انٹرنیٹ پہ، پابندیاں ہوں میڈیا پہ، تو افواہیں ہی اڑیں گی. اور افواہیں پہ کی بنیاد پر ہم سارا کچھ اسپیکولیشن کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں. میرے ساتھ آج مہمان ہیں ڈاکٹر عبداللہ الاحسن صاحب. ہی از بنگالی امریکن، اسکالر ہیں، پروفیسر ہیں. یہ پڑھاتے رہے ہیں ملیشیا میں بھی اور کینیڈا میں بھی، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. تو ڈاکٹر عبداللہ الاحسن صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم. شکریہ بہت بہت مجھے بلانے کی. ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے کہ آپ لوگ آپ کے بارے میں آپ کا پروفائل سمجھ سکیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بتائیں کہ آپ نے کہاں پڑھایا ہے، کیا پڑھایا ہے، اور کیا آپ کا سبجیکٹ رہا ہے، تو تاکہ ہم بات آگے بڑھیں. اور بنگلہ دیش کی جو سچویشن ہے آج، یعنی 53 برس کے بعد بنگلہ دیش کے بننے کے بعد بہت ٹرموائل آئے، بہت سارے نشیب و فراز اور ان اینڈ آؤٹس ہوتا رہا ہے بنگلہ دیش میں. قحط بھی ہوا ہے شیخ مجیب الرحمان کے ابتدائی دور میں، پھر اس سے پہلے بہت کلنگز بھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کی. کو آیا ہے، ملٹری کو آیا ہے، پھر شیخ حسینہ کی حکومت، پھر خالدہ ضیاء کی حکومت. اس میں بھی بہت وائلنس ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ خالدہ ضیاء نے جب کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور شیخ حسینہ نے وائلنس کیا تھا، تو اس میں بھی بہت سارے جو اسلامی چھاتر شونگوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ میں وہیں ڈھاکے میں تھا اور میں لائیو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ان کو بربرزم کی طرح کو مارا گیا تھا. یعنی 2006 یا 2009 تھا. تو چلے پہلے میں آپ کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کا فیلڈ کیا ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا ہے، آپ نے پڑھا کیا ہے اور پڑھایا کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. میرا نام تو آپ نے بتا ہی دیا، عبداللہ الاحسن. اور میں اوریجنلی اس پاکستان سے ہوں. اور انیشیل پڑھائی کے بعد ایکچولی 71 واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. تو 71 میں آئی واز ان فیور آف یونائٹیڈ پاکستان. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ آئی کم فرام اے فیملی where my father, grandfather, they all fought for Pakistan. And you know that this Muslim nationalist sentiment which created Pakistan originated in Bengal. And the main reason for that is that that region went into British rule in 1757. And what is Pakistan known now today, that part became part of British India in 1857, after 100 years. Right. So during the first 100 years of East India Company, that region, which included Bengal, Bihar, and Orissa, this suffered heavily under the British rule.
under the East India Company rule. And during this period, mainly what happened was the Muslim aristocracy was almost crushed, and colonialism promoted caste system in India. Caste system was there already. The Muslim rulers, sultans and Mughals never touched it because they believed in the Quranic guidance that lakum dinukum waliya din, don't interfere into others' religious affairs. So what happened was that during this period, some people, only a few in the name of high caste, they controlled the society. And Muslim rulers did not take care of the repressed class. Only thing is that they were very careful about human rights. Human rights, not in the sense of the way West understands it, but in the real sense of human dignity. So because of all those things, East India Company found a very good segment of the population to cooperate with them. So white supremacist mindset on the one hand, and the Hindu upper caste system, they worked very well together. And that is why Bengal suffered. And when some changes occurred after 1857, the British realized that they made a mistake. So they started to give some advantages to Muslims. They found Muslim leaders like Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Amir Ali to cooperate with them. Through them, some Muslim identity consciousness developed. So that was the foundation for Muslim League, which originated in Bengal. So that is the background. Your forefathers supported Muslim League. Your forefathers supported Muslim League? Yes, they were all part of Muslim League throughout the late 19th century. 20th century. Muslim League came into existence in 1906. Around that time, I would say that many Muslims who had access to education, they joined this. So my family belonged to this kind of group people. तो आपका एजुकेशन कहाँ हुआ? आपका एजुकेशन कहाँ हुआ और क्या पढ़ा आपने? Yeah, after 1971, actually, as I said, I was in supporter of United Pakistan, but we did not succeed. So we just managed to flee the country. 72, I left what became Bangladesh. And then I arrived Pakistan in 1973. Then I was lucky to be in Islamabad. I studied at Qaeda University in Islamabad. Then I left for higher studies in 1977. I went to McGill University in Montreal, studied there, had my master's from there. Then I did my PhD at the University of Michigan at Ann Arbor, Michigan. After that, I worked for a while in Washington for about 3-4 years. Then I went to Sudan for a year for my improvement of Arabic. Then I worked in Pakistan 2 years, from 1988 to 1990 in International Islamic University, Islamabad. 1990, I joined International Islamic University, Malaysia, where I worked about 27 years. After 27 years, I went to Turkey, Istanbul. I taught at Istanbul Şehir University. And during the COVID, two things happened. One was my university became a target of Erdogan's anger, because my university became very vocal against Erdogan's
centralization of power. Right. And the founder of the university that I was working with, he was Prime Minister of Turkey in 2015, 2016, around that time. Acha. But he resigned from his position. And this university was established earlier with government support. But then, because of political differences, university was closed down. And also there was this COVID. Then I came back. My all children, they were born in America. They became American national. And then they were already working in America. So I came back to America. I'm in Chicago now. वेरी गुड डॉक्टर साहब, आप की जो एजुकेशन है और आपका जो एकेडमिक कैरियर है वो एक्सेलेंट है एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और आप ओरिजिनली आपका ताल्लुक ईस्ट पाकिस्तान से है और यू नेवर लिव्ड इन बांग्लादेश। यू लेफ्ट बांग्लादेश इन 1971, यू एंड योर फैमिली। सो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो टर्मोइल है बांग्लादेश में, आप ये देखिए कि वहाँ पे क्या मैं थोड़े से इमेजेस दिखा सकता हूँ लोगों को कि उनका ये देखिए ये साफ कह रहे हैं यंग बच्चा है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट, इट इज़ द डिमांड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। और अभी जो वायलेंस हो रहा है वो आप देखिए कि वहाँ पे वायलेंस किस तरह से हो रहा है और सारे ऑल यंग पीपल आर देयर। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या वो लोग हैं जो कॉलेजेस से निकल गए हैं और दे वांट जॉब्स ओवर देयर। और मेरे पास रिपोर्ट है जो कि यूके के किसी अखबार से मैंने कल ही देखा है कि 170 मिलियन पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, मगर उसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड 30 मिलियन यंग यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। और यही उनके एंगर का है, जो रीजन है वो ये है कि वो जो लिबरेशन फोर्स थी 1971 में, जिसको मुक्ति बानी भी कहते हैं, मुक्ति योद्धा भी कहते हैं, वो लोग मुक्ति योद्धा भी कहते हैं। तो वो जो फाइट किया था उन्होंने जान दी थी मुल्क हासिल करने के लिए। तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा रखा गया था और वो कोटा बढ़ते बढ़ते अब शायद 30% हो गया था और कोर्ट ने भी उसका वर्डिक्ट यही दिया था कि 30% होगा। तो 30% के बाद ये कहते हैं कि हमारे पास तो हमारे लिए जॉब का कोई चीज ही नहीं था उसमें कि हमें जॉब मिलती। तो इतना ये बढ़ता जा रहा है जी कि अब ये करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, प्लीज। Before we go there to this current situation, about my family background, you made I think there's a mistake here. You said that I left with my family. No, I did not live with my family. I was 20, 21, 28, 2-year-old at that time. So what I did was that I was alone. And there is a misconception about 71 war. It did not start as an independent movement. It was a civil war. It was a civil war in my family also. My siblings also, there were supporters of, they became supporter of independent Bangladesh later, not on say, March 1st or March 25th, if you are familiar with the events of those days. So, people became anti-Pakistan during this 9 months of civil war. Not before that. Actually, we make a big mistake about the 1970 election also. It was not a fair election. The steps that central government, Islamabad government took, all facilitated Awami League's victory in the election. Because I'll remind you one point. You see, elections were held, I think, in December 1970. Yes. But the
this legal framework, which was given by Yahya Khan, martial law administrator, he freed political activities from January 1, 1970. Right. January 18, 1970, you see, immediately after the release of this order, political party order, 11th of January, Awami League had a meeting in Paltan, Dhaka. You know that field. That was the main field where political activities would happen. Yes. 18th of January, Jamaat Islami held its meeting. But that meeting, you will remember that was attacked by hooligans. Yes. So this approach of Awami League hooligans, which we witnessed in January 18, 1970, attack the opponents' meetings, stop opponents' voices, that continued. And that is what you see today also. This is, and being in power, Awami League has maintained this position that they have to have their own people in all government machinery. So this is what they have done during the last 15 years. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. इसीलिए वो अब जो यूथ में जो एंगर आया है वो कंटिन्यूटी है उस वो जो उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, अनजस्टिस हो रहा है मुल्क के लोगों के साथ. यानी अवामी लीग की हुकूमत ने कभी भी लोगों की, मुल्क के लिए, अवाम के लिए भलाई का नहीं सोचा, बल्कि अपने आप को मजबूत करने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया. और अब जो एंगर आया है वो एक रीजन है कि चूंकि कोटा इतना हो गया है उनका, अब तो उनके ग्रैंड किड्स हैं वो जो मुक्तियोद्धा, उनके ग्रैंड किड्स हैं. अगर इनके साथ साथ बढ़ता रहा मामला तो बाकी जो यूथ है वो कहाँ जाएगी. और मेरा ख्याल है कि शेख हसीना, as a student of history, I would like to point out some of the early mistakes. जिस वजह से ये हुआ है. So it is important to see those mistakes first. One mistake I was just mentioning, that the policies of the central government was faulty. Because of those policies, in Pakistan era. During the Pakistan era. I mean, these were the people who achieved Pakistan, but their rights were not recognized because of, I mean, there were some practical reasons. जैसे मैंने कहा ना कि the first 100 years, Muslim aristocracy was crushed. Because of that, when in 1947 Pakistan came to existence, East Pakistan did not have as many qualified people as the proportion of the population would have demanded. इसलिए there was a discrepancy at that time. लेकिन government जो है secured the positions of those who inherited from the British period. अब देखें इक्का दुक्का इस पाकिस्तानी थे, जैसे कि इस्कंदर मिर्जा, first president of Pakistan. He was from there. Incidentally, he comes from the family of Mir Jafar. But he became the first president of Pakistan. And at that time, you would remember popular leaders like Sahrawardi, like Fazlul Haq, they were not recognized. Ayub Khan, Ghulam Muhammad, these people came from the British bureaucracy and British army. They became the policymakers of Pakistan. And India, of course, took full advantage of this. So in 1971, we understood very well, because of the geographical location of East Pakistan, it would be very difficult for a country like small territory of East Pakistan or Bangladesh to remain independent. So what is happening today, this privilege of Awami League or Hindu community, not all Hindus, there are very good Hindus also,
But unfortunately, because of this approach, because of this policy, this group exploited the whole situation. And Right. Awami League has developed this mechanism that all government machinery Right. has to be controlled by them. And quota system is part of that. So this is what we need to Right. understand. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, अब चलते हैं हम अब करंट सिचुएशन की तरफ. नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी लॉग ENN और मेरे साथ आज मेहमान है डॉक्टर अब्दुल्ला अल अहसन. इनका ओरिजिन ईस्ट पाकिस्तान है और ये वहीं पैदा हुए, वहीं पले बढ़े और बाद में ये पाकिस्तान भी आए, बाद में ये कनाडा भी आए और यहाँ भी पढ़ाया, मलेशिया में भी पढ़ाया और शिकागो में अब आजकल हैं. और इनकी गहरी नज़र है पॉलिटिक्स पे और बांग्लादेश की भी पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है. नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और करंट सिचुएशन पे बात करेंगे. बांग्लादेश में जो अभी टर्मोइल है और बड़ी अफवाहें फैल रही हैं कि बाज़ अफवाहों में ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश फ्लड ऑलरेडी और बहुत से MPs हैं जो मुल्क से निकल गए हैं, सिंगापुर और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पहुँच गए हैं. और कुछ डेथ टोल के बारे में भी खबरें हैं कि कोई 100-200 कहता है, कोई 1000 कह रहा है कि लोग मारे जा चुके हैं और फौज आ गई है. मगर कहा यह जा रहा है कि फौज के यंग जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं चाहते कि अपने अवाम पे और यूथ पे गोलियां चलाएं. तो वहाँ भी Actually, they have issued, sorry for interruption, actually they have issued a statement that we will not fire on the population. Yes, मैं आपसे पूछूंगा जी, मैं अभी आपसे पूछूंगा इस बारे में. तो ये सारे जो बातें हैं इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि इंसानियत के लिए काम हर जगह हो रहा है. और हमारे यहाँ अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है ज़कात फाउंडेशन और वो अभी चैरिटी मुशायरे कर रही है अमेरिका के बहुत सारे स्टेट में. और वो इसलिए कर रही है कि दुनिया में बहुत से मुस्लिम जो यूथ हैं और चिल्ड्रन हैं और ऑर्फन हैं, उनकी हालत ख़ास के गज़ा के जो बच्चे हैं वो उनके जो ज़ख्मी हैं उनको इजिप्ट के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चैरिटी मुशायरा अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स में करा रही है. तो मैं दरख्वास्त करूँगा, ये हमारा प्योरली नॉन कमर्शियल अनाउंसमेंट है, इसमें कोई कमर्शियल नहीं है. सिर्फ हम इंसानी हमदर्दी के तहत हम इसको ऐलान कर रहे हैं ताकि लोग जाएं और चैरिटी में हिस्सा लें. तो आप ये वीडियो देखिए और जहाँ जहाँ आप लोग हैं मुशायरे होंगे वहाँ पे आप जाइए और बहुत ही रीज़नेबल उसमें चार्जेस हैं. उससे जो गज़ा के बच्चे हैं उनकी इमदाद के लिए ये हो रहा Zakat है. Foundation of America is proud to present 5 of the world's best Urdu poets. जहाँ कोई नहीं होता खुदा तो होता है. और मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं कि आज उसके सवाल सब लाजवाब निकले. खाली हाथ घर जाता हूँ मैं. These stars will perform in 9 major cities across the U.S. Come and join Zakat Foundation in this charity mushaira to help millions of orphans across the world. तो जी जनाब नाज़रीन, ये थी चैरिटी मुशायरे का एक नॉन कमर्शियल अनाउंसमेंट था. कोई पेड कमर्शियल नहीं है ये. तो ये इंसानी हमदर्दी के तहत हमने ये अनाउंसमेंट चलाया है. तो अब मैं चलता हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला अल अहसन साहब के पास कि अभी जो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि ये सारी अफवाहें हैं और कहा यह जा रहा है कि MPs भी भाग गए हैं और शेख हसीना के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो और फिर डेथ टोल की खबरें बहुत ज़्यादा हैं. तो आपकी क्या इत्तलात हैं और आप क्या समझ रहे हैं कि वहाँ पे क्या इस वक्त हो रहा है और आर्मी का क्या रोल है? इसलिए कि आर्मी को तो उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है कि वो हंगामों से निपटें. तो बताइए हमारे नाज़रीन को डॉक्टर साहब. एक्चुअली इंफॉर्मेशन तो बहुत मुश्किल है जैसे आपने बताया है, बट व्हाटएवर वी कैन फिगर आउट is that एक तो ये है कि there are 3 forces: police, RAB, army, armed forces.
तो उसमें पुलिस में तो I mean almost I would say definitely 60-70% जो है Awami League cadre or their supporters or people who are aligned with them. Right. Very difficult to find any neutral people. अच्छा, There are some individuals who are looking for opportunities, so they take advantage of the situation. Or Rapid Action Battalion. This is kind अच्छा, of Rapid Action auxiliary Battalion. force. Ji. अच्छा, Auxiliary ये force special force. has same role. It has started by the ruling party, and I think it existed during pre-Awami League period also. Yeah, but it has been penetrated fully by the ruling party, Awami League. Right. And army में अभी भी जो है थोड़ा बहुत, I mean, there is competition, so you can expect some fair-minded people there. But at the same time, in armed forces also, at least at the top positions, particularly when, I mean, last 15 years she is in power, Awami League's Hasina. She has deployed her own relatives or very loyal people at the top. So what I have been told is that at least 5 days ago, as soon as this started, Army had its top brass, like the brigadier and up. They had a meeting, and that meeting did not come up with any specific conclusion. So the one segment that I have just mentioned to you, that the younger people, younger officers, they decided that they will not fire on the population. The chief, who is a relative of Hasina, wanted to take firm action. That was not accepted by the rest of the officers. There is a group which wants kind of balance between the two. तो इस वक्त जो है, what I understand is that they are only patrolling the streets. They are not taking part of any action. This is what I understand. But it all depends on how the other two. I think in many places, police stations have been attacked. They have been burned also. Many places, RAB people, I think many people have seen this footage that RAB people were taking action in a university, and then the university was surrounded by people. They could not come down. They could not come out of the building. So they were rescued by RAB helicopter from the roof of the building. So this is the kind of situation. They don't have any control of the streets, are in the hands of the people. Right. अच्छा, एक बात है कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सिलसिला है, ये अब कोर्ट ने शायद जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने शायद उस पे थोड़ा सा चेंजेस लाया है वर्डिक्ट में, कि कोटा सिस्टम उन्होंने कम कर दिया, शायद 7% कर दिया है, ताकि थोड़ा सा, लेकिन ये वायलेंस रुक नहीं रहा है। और अभी मैं आपको एक वॉइस सुनाऊंगा। वो महमूदुर रहमान साहब हैं, जो कि एडवाइजर थे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश के, एंड ही इज इन टर्की। उन्होंने टर्की मीडिया को एक अभी इंटरव्यू दिया है, वो मेरे पास आया है। मैं वॉइस में से सुना सकता हूँ, वॉइस आपको सुनाता हूँ मैं, कि उसमें वो क्या कह रहे हैं। There has been 7% quota and 93% on the basis of merit, but I think it is too little and too late, because it is not only quota now, it is more for justice. What will happen to more than 300 young people, our children, who lost their lives? You see, the killings were similar to what is happening in Gaza by the giant Israeli regime. In the same way, the present government of Sheikh Hasina has killed our children.
in Bangladesh. It is unthinkable in a country where an autocratic government is killing its own people. You see, there are two sides, two aspects of this problem. One is domestic, and the other is geopolitical. We have to understand that. The domestic part is this, that you have to understand this government is unelected, and this government is clinging to power by arranging sham election. They have already 3 consecutive sham elections since 2014. And manipulating the system, manipulating the government machineries, they are in power, depriving the people from exercising their rights of franchise. Sheikh Hasina wants to remain in power at any cost, with the assistance of the neighboring regional power, India. And as a result, the country has become a autocratic country and an autocracy, a complete autocracy, where human values are. डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? ये रहमान साहब की बात दुरुस्त है कि ये कंटिन्यूटी है कि शेख हसीना 2 बार जो इलेक्ट हुई हैं वो उनको वोट नहीं मिले हैं और उन्होंने जबरदस्ती इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है, और ये एंगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और एक रीजन मिला है अवाम को कि कोटा सिस्टम की तरफ से यूथ जो है वो बहुत ही नेग्लेक्टेड हो रहे थे और वो बाहर निकल गए हैं। तो अब ये शायद ये कोटा पे बात रुकेगी नहीं, बल्कि वो जो एंगर है लोगों का बहुत दिनों से, 2 टेन्योर से, वो अब आगे बढ़ेगा। और आपकी क्या इत्तला है कि ये एमपीज और ये प्राइम मिनिस्टर, इनकी क्या कंडीशन है, सिचुएशन क्या है इनकी इस वक्त? Situation तो again is very controversial, mainly because we don't have exact information. But what I have been told from the footage in European airports and Singapore and Kuala Lumpur airports, that many MPs and strong supporters of Awami League, they have already left the country. This is from the footage. This is not rumor. This is from the footage. Reliable. Yeah. Right. So this is what is happening. Of course, it is not only these forces, RAB or our army. Main force that Hasina depends on is RAW, Indian RAW. Right. In fact, I remember talking to a general, a retired general of Bangladesh Army, who was a very key officer during this 2006 military coup. He said to me face to face that at one stage Hasina was among the top generals. She came and she said that, no, Pranab Dada has assured me that they will take care of my security. This is a general saying that this Hasina has said in their presence. So this is the situation. And what happened, I think I mentioned to you a few minutes ago, that few days ago, about 100 RAW officers came and they conducted some targeted killings, and they fired on the head and they killed them, put them, the dead bodies to Dhaka Medical College, whatever is now, university, I think now. They dumped the dead bodies and they left. This is exactly happened in 2009 when this BDR, which was abolished. BDR was, there was a conflict between BDR and the army. At that time also, the real action was taken by these RAW officers who came from India. They dressed up with those Bangladeshi official dresses and they conducted the operation and they left. So main position is not clear, and also Hasina is not the main problem. The main problem is neighboring state. अच्छा डॉक्टर साहब, एक पॉइंट पे मैं लाना चाहता हूँ आपको कि when BDR
incidents were there in 2009, जी, I was personally there physically in Dhaka and in Dhanmandi near BDR, you know, I was there and I was watching that live TV which was covering whole incidents. Also, मैं 2006 में भी वहाँ था. उस दिन जिस दिन खालिदा ज़िया की हुकूमत ख़त्म हो रही थी टेन्योर और इलेक्शन होने वाला था कि जिसमें शेख हसीना भी पार्टिसिपेट कर रही थी, मगर शेख हसीना ने एक्सेप्ट नहीं किया वो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होने वाले थे, और वो कहती थी कि चूंकि खालिदा जिया ने अपॉइंट किया है इसको, मैं नहीं मानूंगी. और उस दिन वो भी लाइव टीवी पे मैं वहां देख रहा था बैठ के कि उस दिन जो अवामी लीग के वर्कर्स थे वो इस्लामी छात्र संघों और जो बीएनपी के स्टूडेंट्स विंग थे उनको दौड़ा दौड़ा के इस तरह मार रहे थे जैसे कि सांप को मारा जाता है स्टिक से, रॉड से. और मैं अपनी आंखों से देख रहा था. आई थिंक कि शायद 7 और 8 स्टूडेंट्स मारे गए थे उस दिन. और उसके बाद अभी भी लास्ट वीक 7 स्टूडेंट्स मारे गए. अब तो ये डेथ टोल बढ़ गया है. तो बात ये है कि 1950s में जब लैंग्वेज मूवमेंट वहां खड़ा हुआ तो 7 स्टूडेंट्स के पुलिस ने शॉट किया. ईस्ट पाकिस्तान पुलिस ने शॉट किया. फेडरल में नहीं पुलिस होती थी, ईस्ट पाकिस्तान पुलिस. बंगालीज थे होंगे उसमें, कुछ भी कुछ दूसरे भी होंगे. तो उन्होंने उसको बेस बना के आपने पूरा मुल्क अलग कर दिया, हेट्रेड पढ़ा दिया. और अब तो आपका अपना मुल्क है, अपने लैंग्वेज के लोग हैं, अपने दूसरी पार्टी के हैं तो क्या हुआ, अपने मुल्क के तो हैं. और आप इस तरह से कंटिन्यूअसली अपने ही लोगों को मार रहे हैं. तो आपने आपकी जो पॉलिसी थी प्री बांग्लादेश और अब में क्या फर्क है. पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं. आज भी हिस्ट्री में वो बंगालीज के इस तरह से 7 स्टूडेंट्स को मार दिया बंगला मूवमेंट, और आपने वहां पे शहीद मीनार बना बना के हेट्रेड पैदा किया. जो नॉन बंगालीज हैं उनको उस बुनियाद पे इतना किलिंग किया है. आप उसके बारे में क्या कहेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए. देखिए, what Mahmood Rahman has said is 100% correct. Okay, this is a addition, I mean, a compilation of anger of many years, more than 50 years. So this is what has happened. And again, as a student of history, I will refer to Ibn Khaldun. Ibn Khaldun highlights these points, that this kind of injustices start slow, but with the passage of time, it increases, and this he calls it zulm, injustice. With the rise of zulm, rises the amount of anger and frustration. And this eventually leads to the downfall of government. So this is what is happening. So this anger, again, you will see that this kind of development is not unique in Bangladesh. This is happening in Pakistan also. This kind of aggressive attitude on the part of the people in power. There. One point that we should highlight is the role of the press, media, and also academia. There is a huge misconception about 1971, and they have introduced the idea that there was a genocide conducted by Pakistan in East Pakistan against the Bengalis. The real genocide that happened was against the so-called Bihari community. Actually, it is not Bihari community, it is all non-Bengalis. And pro-Pakistani. I would say non-Bengalis, Actually, I will not say pro-Pakistani because there were more pro-Pakistani Bengalis than pro-Pakistani non-Bengalis. So I will not categorize them as pro-Pakistani element only. So, but the massacre that happened, of course, many pro-Pakistani Bengalis also died, but the organized, orchestrated actions were taken against non-Bengali
Muslims in East Pakistan. Most of them, of course, came from Bihar, and that is why they were known as Bihari community. Yeah. And that is something is missing in the whole rhetoric. And therefore, when you call Mukti Jodha, among these Mukti Jodha, there are those elements who conducted this kind of operations also. And that is the kind of behavior that you can see with some of these people. So you have to relate this, that these things are a compilation of anger of so many years. And of course, it is not only quota. And you mentioned about this Chief Justice's decision that he said that action has been taken to minimize the quota. I mean, if that Chief Justice, you mentioned that Khaleda Zia had appointed, so Hasina will not go into election under his caretaking government. This justice was appointed by Hasina. Who should trust these judges? So this is the question that one should raise. So this is all trying to minimize the damage, but that is not going to stop. The way things are moving now, I think government is going to fall, but the challenge is who will replace the government. Because the government has deliberately destroyed all the institutions, and the institutions are missing. So only force that exists is India's hegemony, and it has its own forces in India. So this is how they are controlling. How the situation is going to go forward, very difficult to predict. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड है कि जब ये जो कोटा सिस्टम किया और उसको बढ़ा दिया और उसकी वजह से जॉबलेस हो गए, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मीडिया के 30 मिलियंस के करीब यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं और इसकी वजह से एंगर बढ़ा है उनका और ये वायलेंस शुरू हो गया है। तो ये जो मुक्ति योद्धा के जो अब ग्रैंड किड्स हैं उनको अवार्ड किया जा रहा है, रिवार्ड दिया जा रहा है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने जो के बांग्लादेश को बनाने के लिए उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं उसका उनका रिवार्ड दिया गया है। तो क्या ये सवाल तो जहनों में उभरता है, जो अफेक्टेड लोग हैं, जैसे आपने कहा कि बिहारी फैमिलीज जो कैंपों में पड़े हुए हैं अभी, जो पाकिस्तान में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, उनके जहन पे ये सवाल उभरेगा कि क्या वाकई उन्होंने जद्दोजहद जंग करके मुल्क हासिल किया जिसके सिले में उनको दिया जा रहा है ये कोटा, या उन्होंने जो बिहारियों का जो कत्लेआम किया है जो पूरे ईस्ट पाकिस्तान में, और उसके बाद बांग्लादेश बनने के बाद जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट से बंगालीज जो कि अब वहां का हिस्सा बन चुके थे उनको फांसियों पे लटकाया गया है। तो क्या ये जस्टिस था कि उनको ये इनाम दिया जा रहा था कि तुमने बहुत मारा है लोगों को तो ये तुमको इनाम दे रहे हैं कि हम आम लोगों को, गरीब लोगों को जॉब नहीं देंगे, तुम्हें जॉब देंगे, तुम्हारी फैमिली को, आइंदा आने वाली नस्ल को जॉब देंगे? क्या कहेंगे आप इस सबसे? नहीं, आपने ठीक, you have identified the problem well, because this injustice, those who fought in 71, that is why I was saying that there is a misconception about 1971. Misconception is that it was a freedom fight. As I said, it was not a freedom fight. It started as a civil war and originated with the demand for rights of East Pakistanis. And that is how it started. And then slowly, of course, it changed its face. And those who participated, among them, there were those kind of hooligans who participated. That behavior you can still see. And those who were genuine freedom fighters, Mukti Bahini, they have been slowly ousted from the system. There were many, of course, as I said, civil war, people seeking justice, they participated in the war. So there were genuine people who wanted real freedom. But because of their lack of understanding of history, they took India's help.
to Right. break up Pakistan. Pakistan. And it is Right. not only, I will not only say that India is responsible for this. It is Pakistani administration also. Yes. They Yes. fell into the same traps that India had set for them, and very easily they became Exactly. target of that. I Exactly. mean, I will just mention one point. You remember in 1971 when the flight between the two wings of Pakistan was stopped based on an event of hijacking a plane called Ganga. Exactly. Yes. This Ganga hijacking was totally manufactured by the Indian Exactly. agents. It has been established now, but Right. you know, these hijackers were welcomed by Bhutto. So the Bhutto's role in 71 was very significant in separating, in dividing Pakistan. So these things people should know. Right. Acha, Blaming yes. Awami League will not give us a good solution. राइट अच्छा डॉक्टर साहब आप चूंकि बंगाली निजाद हैं आप वहीं पैदा हुए हैं आपकी फैमिली और सब कुछ यू आर ए बंगाली मुस्लिम और आप ईस्ट पाकिस्तान में जब ये वहाँ पे वायलेंस हुआ था 71 में मार्च में यू वर देयर तो एक मिस्टेक मेरे हिसाब से हुई थी जो वही मिस्टेक आज बांग्लादेश गवर्नमेंट भी शेख हसीना भी कर रही है यानी जनरल टिक्का खान ने आर्मी ऑपरेशन से पहले तमाम फॉरेन जर्नलिस्ट को इस पाकिस्तान से निकाल दिया था जिसकी वजह से वो जो मैसेकर हुआ था बिहारियों का उसकी खबर बाहर नहीं आ सकी जी और वो जो कलकत्ता में जाके बैठ गए थे फॉरेन जर्नलिस्ट वो कल इंडिया जो प्रोवाइड करता था उनको न्यूज वही वो फ्लेयर अप करते थे वही सब करते थे आज शेख हसीना ने भी यही इंटरनेट बंद कर दिया अखबार पे पाबंदी लगा दी फ्लाइट्स बंद कर दी ट्रेन सर्विसेज बंद कर दी जिसकी वजह से र्यूमर्स अब आ रहे हैं कि शेख हसीना भी फ्लड कर एमपीज आपने बता दिया कि एमपीज का तो बिल्कुल मुसद्दिका खबर है कि वो सिंगापुर जा रहे हैं तो नाजरीन अभी बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल अहसन साहब से वो स्कॉलर हैं और प्रोफेसर हैं और ईस्ट पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है और मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर साहब अपने आप को बांग्लादेश का नहीं कहते हैं आप अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान का कहते हैं इसलिए कि वो पाकिस्तान के न सिर्फ ये बल्कि इनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान की इनके फोर फादर्स पाकिस्तान के पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान के थे तो डॉक्टर साहब ये आप बताइए कि क्या यही गलती शेख हसीना नहीं कर रही है जो कि टिक्का खान ने किया था उस वक्त ये खाली टिक्का खान और हसीना नहीं all authoritarian regimes do that. This is again I will generalize as a student of history that you will find this kind of behavior everywhere. So when you suppress the truth, you become victim eventually. So this is what is happening. So they have suppressed the truth, and as a student of history, I strongly feel that history has not been studied carefully. If we had studied history, we would not have fallen into trap of conspiracies. Again, Pakistan ki situation, I mean, you will find that there is a general tendency to blame others for your fault. Exactly. Yes. But when you study history with good evaluation, you will see that how many mistakes you have committed. You have done, yes. So, yes, that is, I mean, my appeal to listeners is that please try to understand history critically. Analyze it, raise question, and you will see that you will find the truth. And this is my main mission actually of my life, that try to encourage people to seek the truth by asking questions. I mean, long time ago, more than 2000 years ago, Socrates suggested this formula of research methodology. But unfortunately, we don't follow this. And Quran endorses this very well. Quran is asking us time and again, afala taqilun, in kuntum taqilun,
Afala yatatabbarunul Qur'ana. We don't contemplate. And that is our main problem, be it in Pakistan, be it in Bangladesh, be it in India, or in Palestine, everywhere. Right. I mean, just imagine yesterday, government of Pakistan has declared Netanyahu a terrorist. But they don't realize that they are supporting Netanyahu's mission by subscribing. I mean, just imagine when Imran Khan was taken off from power. Right. What was the motivation? Basically, he wanted an independent policy. And that was not approved by the hegemonic powers. And Netanyahu is part of that hegemonic power. And yes, your generals also have become part of that hegemonic power. So they had to understand this. See, it is not a problem of Bangladesh alone. It is a human problem. right. And Quran teaches us the mechanism to fight it. Right. Do that. Allah will guide you. राइट, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ चलते चलते, कि आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ने जो 1971 में करंट सिचुएशन थी वहां पे प्रिवेलिंग, के फर्स्ट मार्च से 24 मार्च तक आर्मी कंटोनमेंट में बंद थी और मैसेकर पूरे ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने शुरू किया हुआ था नॉन बंगालीज के खिलाफ, उसके बारे में पाकिस्तान आर्मी ही वहां पे थी, उसने कभी भी मुंह नहीं खोला दुनिया में या पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, कि कितने वहां पे एट्रोसिटीज हो रही हैं अगेंस्ट नॉन बंगालीज। और आज भी जबकि बांग्लादेश अपना वो उसको कहते हैं एक्शन रिप्ले दिखा रहा है अपने ही लोगों को मार के, तो आज भी ये खामोश हैं कि ये अभी तो इनके लिए बेहतरीन मौका था दुनिया को बताते कि इस तरह इन्होंने इस पाकिस्तान में 1971 में अगेंस्ट बिहारीज किया था, मगर ये मुंह नहीं खोलते। आप ये देखिए, ये पिक्चर्स, ये इमेजेस, ये डेड बॉडीज हैं जो कि 1971 में इज्तिमाई कब्रों से निकाल के दिखाया गया था फॉरेन जर्नलिस्ट को कि ये पाकिस्तान आर्मी ने बंगालीज को मारा है, जबकि आप भी गवाही देंगे और बहुत से लोग हमारे प्रोग्राम में आके बता चुके हैं, डॉक्टर ताज हाशमी भी बता चुके हैं कि दे वेयर एक्चुअली बिहारीज डेड बॉडीज, और वो मुफ्ती बहानी ने मारा था। तो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्यों नहीं मुंह खोलते हैं? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? डॉक्टर साहब, आपकी कुछ समझ में आता है? नहीं, I think even more clearer evidence of this attitude is that Bhutto, when he came to power after 1971, he formed a judicial committee to inquire about East Pakistan tragedy. And he appointed the Chief Justice, I'm forgetting the name, Rahman. The Chief Justice came up with the report, and that report was not made public. Hamudur Rahman. That's right. Yes. Justice Hamudur Rahman's report was not published in Pakistan also. In fact, I remember I once visited his son in Lahore. He was also a judge in Lahore High Court and Islamabad High Court. I think Hamudur Rahman's son, I think Justice Iqbal Hamudur Rahman. Iqbal Hamudur Rahman, right? Yes. He told me that this FSF, Federal Security Force, raided their house, not only took all the materials that his father had accumulated in preparing that report. The report was not published,
and all the Yes. materials that he worked on also were seized from his house. This is how Right. Pakistan treated at that time. So Yes. the Yes. point that you Yes. are raising is a genuine point. But again, Mhm. problem is that these people's mindset has not changed. And that is Exactly. why you Exactly. cannot expect that they will do Yes. डॉक्टर justice. साहब, आपको मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट, कि हमीदुर रहमान कमीशन के बारे में आज जो बात हो रही है, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ा है, और फ्रैंकली स्पीकिंग आई डिड नॉट रीड इट पर्पसली. क्यों? कि मेरी नज़र में हमीदुर रहमान कमीशन अब जो है वो असली हालत में है ही नहीं. सबसे पहले भुट्टो साहब ने उसमें अमेंडमेंट करके रख दिया, पूरा फौज पे डाल दिया ताकि अपने आप को बरी-उज़्ज़मा करार दे दें. और दूसरे इंडिया में पब्लिश हुआ 90s में, तो इंडिया Yes, ने अपने पर्पस के लिए उसको कितना अमेंड किया होगा, अब मैं उसको क्या पढ़ूं, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है. इसलिए कि जस्टिस हमीदुर रहमान कमीशन वाज, जस्टिस हमीदुर रहमान वाज हिमसेल्फ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बहुत ही and he was लर्नेड थे. Bengali. He was Bengali. He was from East Pakistan, yes, Yes. and he preferred to live in Pakistan. तो वो पाकिस्तान Yes. से इतनी मोहब्बत करते थे, और उन्होंने रिपोर्ट दे दिया था, भुट्टो ने अपने घर पे रख दिया. और भुट्टो को जब Exactly. अरेस्ट किया गया तो मेरे नॉलेज के मुताबिक मुझे शामी साहब ने बताया कि जब उनके घर पे रेड हुआ तो उनके घर से वो कमीशन रिपोर्ट मिला, बट इट वाज नॉट इन द ओरिजिनल शेप. तो बहुत सारे इस वक्त दोस्त हमारे देख रहे हैं प्रोग्राम, और सब इस पे कह भी रहे हैं कि आज बिहारी पूछेगा, हक रखते हैं, पूछने का हक रखते हैं, ये कैसी आज़ादी है, अगर ये ही कुछ होना था तो पाकिस्तान क्यों तोड़ा, पाकिस्तान क्यों तोड़ा, किसने तोड़ा. शाहिद मोहिउद्दीन साहब पाकिस्तान से बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी. गुलबानो हमारी जो को होस्ट हैं वो पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम में नहीं आती हैं, वो अदबी शायरी वो प्रोग्राम में हमारी होती हैं, हमारी को होस्ट करती हैं. वो भी हैं इस वक्त शामिल हमारे साथ. निज़ामुद्दीन साहब हैं, वो हमारे सवालात पे बहुत खुश हैं कि हमने बहुत अच्छे सवालात किए हैं. फैसल फराह खान वो भी देख रही हैं प्रोग्राम. और डॉक्टर साहब बहुत सारे बंगाल व्यूअर्स भी हमारे होते हैं, वो देखते हैं. तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप मैसेज दीजिए, आप इंग्लिश में दे रहे हैं, आप उर्दू में भी दीजिए, ताकि हमारे जो उर्दू देखने वाले हैं, इंडिया से भी हमारे प्रोग्राम देखते हैं, लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो आप उनको उर्दू में भी एक पैगाम दीजिए अभी करंट सिचुएशन के बारे में, और बंगला में भी दीजिए, मेरी गुजारिश होगी कि लोग देखें. और हमारे निज़ामुद्दीन मोहम्मद इस वक्त मिशिगन से हैं, वो कह रहे हैं कि मुक्ति बहानी इंडियन फौज के साथ मिलकर बिहारियों की नस्ल कुशी की थी, और इन्होंने अपना, ये आई विटनेस है, ही वाज इन खुलना, और खुलना में जो जूट मिल में जो स्लॉटर हाउस बना था, ये छोटे थे बच्चे, और इन्होंने कहा मैंने जाके उसमें वो देखा है म्यूजियम रूम में कि जहाँ पे इंसानी आज़ा के पार्ट्स के दीवारों पे बिल्कुल सजाया गया था, औरतों की छातियों को सजाया गया था, मर्दों के सर को सजाया गया था, और पाकिस्तान आर्मी ने जाके उसको देखा था. तो आपसे मुझे गुजारिश है कि आप उर्दू में भी और बंगला में भी आप मैसेज दीजिए जो आप बताना चाहते हैं. अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा भी था व्यूअर्स के बारे में कि उनको ये समझना चाहिए, तो प्लीज जो करंट सिचुएशन है बांग्लादेश की, उसके हवाले से आप जो कहना चाहते हैं कहें प्लीज. No, basically, I'll first say in English. Let me say, ठीक है. the thing is that one has to be rational in their approach to understand the situation. Right. When you are rational, raise right question, as I said, referring to Socrates. Mhm. When you ask the right question, you will be able to find the truth. So when you ask, you can naturally see, based on your understanding of history, who was responsible for it. There are a lot of people responsible for it. But mainly is the mindset. The Right. mindset that we have is the problem. So usme, I mean, you have a lot of,
kind of disciplines that we follow, that how to raise questions. You have subjects like anthropology, sociology, political science, economics. They teach in their research methodology how to raise questions. Now, when you ask questions based on these disciplines, what happens is that you have a mindset set by this European Enlightenment tradition. In European Enlightenment tradition is great, but at the same time, European Enlightenment tradition does not recognize the existence of God, how God has guided throughout history. These things are missing in those questions. As a result of that, those questions cannot answer your query. So उर्दू में मैं थोड़ा सी कर रहा हूँ कि आपकी माइंडसेट जो है उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा. आप क्वेश्चन करना सीखें. क्वेश्चन जब अच्छी तरह करेंगे, यू विल बी एबल, आपको पता चल जाएगा कि ट्रूथ क्या है. एंड अल्लाह विल गाइड यू. अल्लाह बार बार कुरान में कह रहे हैं कि आप सोचो, तुम इन कुंतुम ताकिलून अफला ताकिलून, डू दैट. अल्लाह इज ग्रेट, ही विल गाइड यू, but you have to come forward with your তো বাংলাতে বলবো আমি যে সেটাই একই কথা, যে আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে শিখতে হবে. ইউ লার্ন, আপনি প্রশ্ন করা শিখেন, ভালো প্রশ্ন করেন, আল্লাহ গাইড করবেন. Mashallah. Thank you very much, Dr. Saab. And I will again invite you till the situation is going to be calmed down. एंड मैं नाजरीन को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अब्दुल्ला अल अहसन बंगाली नजाद अमेरिकन हैं और इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हासिल की है. फिर उसके बाद इन्होंने पढ़ाया है मलेशिया में, टर्की में, कनाडा में, यहाँ अमेरिका में भी, और आजकल अमेरिका में रह रहे हैं. और इनकी बहुत अच्छी सोच है और ये कभी भी ईस्ट पाकिस्तान को अपने रिहाइश के तौर पे नहीं कहते हैं कि वो बांग्लादेश में रहे हैं या बांग्लादेशी हैं. ये ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं. और उन्होंने 1971 में वो ईस्ट पाकिस्तान छोड़ा था. उसके बाद ये पाकिस्तान के हामी हैं, पाकिस्तान को मुत्तहद देखना चाहते थे. और अगले प्रोग्राम में हम बांग्लादेश की सिचुएशन पे फिर गुफ्तगू करेंगे. और उसके लिए हम बांग्लादेश के एक और स्कॉलर जनाब डॉक्टर ताज हाशमी साहब से मैंने आज बात की है, and he agreed to be in our program. और उनका भी एक अपना चैनल भी है, तो वो भी टच में रहते हैं और he is political analyst too, तो वो भी आपसे आके गुफ्तगू करेंगे. मैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल अहसन का बहुत मशकूर हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए. हम आइंदा भी आपको, और भी मौज़ूआत हैं, गज़ा के हैं, मिडल ईस्ट के हैं, उस पे भी आपकी गहरी नज़र है, मैं उस पे भी आपको अपने प्रोग्राम में बुलाऊंगा. नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमारा आधे घंटे का प्रोग्राम करने का था इरादा, मगर ये इतनी दिलचस्प गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने की है कि वो 1 घंटे का प्रोग्राम हो गया है. आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे और दूसरे जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उस पे, ताकि लोगों को सही सूरत हाल का पता चले, एकेडमिकली इसको समझ सकें कि क्या है मामला और क्या था और कहाँ से चला था. मैं इसी के साथ प्रोग्राम अपने वीलॉग ENN से आपसे इजाज़त चाहूँगा. अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़. बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू डॉक्टर.